तो गाइस वेलकम टू एक्चुअल कोडिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है स्विच केस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन में से सिर्फ एक ही कंडीशन प्रिंट करवानी हो तो हम स्विच केस का यूज करते हैं। तो चलिए स्विच केस का सिंटैक्स देखते हैं। स्विच ब्रैकेट में एक्सप्रेशन और ब्रैकेट में केस 1 एंड प्रिंट स्टेटमेंट। फिर केस 2 एंड प्रिंट स्टेटमेंट और बाद में डिफॉल्ट स्टेटमेंट और कर्ली ब्रैकेट ओवर। तो ये है स्विच केस का सिंटैक्स। तो चलिए देखते हैं रियल टाइम एग्जांपल। स्विच केस के एग्जांपल में हम डे प्रिंट करवाएंगे। तो डे प्रिंट करवाने के लिए हम पहले वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर ए, क्लियर स्क्रीन। अभी स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंटफ /n एंटर योर नंबर स्कैनफ %d अल्पविराम एंड %a। स्विच ब्रैकेट में ए, कर्ली ब्रैकेट केस 1, उसमें हम प्रिंट करवाएंगे मंडे। फिर ब्रेक केस 2 ट्यूसडे, ब्रेक केस 3 वेडनेसडे, ब्रेक केस 4 प्रिंटफ थर्सडे, ब्रेक केस 5 प्रिंटफ फ्राइडे, ब्रेक केस 6 प्रिंटफ सैटरडे, ब्रेक केस 7 प्रिंटफ संडे।
ब्रेक। ओके, डिफॉल्ट printf valid enter valid number और ब्रेक और कर्ली ब्रैकेट ओवर गेट ch। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम इसे रन करवाएंगे। एंटर योर नंबर, माई नंबर इज़ 1, तो हमें मंडे प्रिंट हुआ। माई नंबर इज़ 5, तो हमें फ्राइडे प्रिंट हुआ। तो स्विच केस वर्क कैसे करता है? तो अब हमने जब यहाँ पे 1 पुट किया तो ये 1 यहाँ पे स्विच केस के एक्सप्रेशन पार्ट में यानी कि ए में हुआ, ए प्रिंट हुआ, और ये 1 यहाँ पे चेक हुआ कि यहाँ पे 1 है, तो हम स्विच केस ने सीधा मंडे प्रिंट कर दिया और ब्रेक हो गया हमने। तो ये था स्विच केस का एग्जाम्पल। अगर आपको स्विच केस का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे और थैंक यू फॉर वॉचिंग।